Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. So I'm doing a series on my channel where I try out eyeshadow palettes, affordable eyeshadow palettes from different brands, and this is the next episode of that series. And the palette which I'm going to try out in this video is this one from Nykaa. It's their Eyes on Me 10-in-1 eyeshadow palette. Nykaa launched this eyeshadow palette sometime back, I guess 3-4 months back they launched this palette. I didn't buy this palette when it first launched because I was not sure about the palette, but then I thought ki it will be a good palette to try out in this series, so that's why I got this palette. Actually Nykaa started delivering in my area and I ordered it recently and I got this palette, and I got this one in the shade Beachside Peach. So in this video I'll be trying out this palette, and I have actually created this look using this palette. So I'll be creating this look in today's video, and I'll be sharing my review about this palette with you in today's video. So if you are interested, please keep on watching this video. So this is Nykaa Eyes on Me 10-in-1 eyeshadow palette. It comes in this kind of cardboard packaging. And this one is in the shade Beachside Peach, so you can see the shade name is written on top. It comes in this black cardboard packaging, and all the details are mentioned on the outer packaging itself. This palette retails for 599 rupees. You get 10 shadows in this palette, and the shelf life of this palette is approximately 3 years. So as I told you, all the details are mentioned here. So let's see what they say about this palette. So here it says that learn the art of a mesmerizing eye contact with Nykaa 10-in-1 eyeshadow palette. These shadows are rich in color and are easy to blend. The mattes and shimmers are cocktailed to give you the ultimate palette for a chic look. The mattes are velvety, vibrant, and the shimmers are full of sparkle. They are all highly pigmented and blend like butter. So let your eyes tell your story with this palette. And they also say that it has intense color payoff, they are waterproof and easy to blend. Also, it's dermatologically tested, it's totally vegan, it's cruelty free, so there is no animal testing done for this palette, which is really good. And the net weight of this palette is 12 grams. So this is the outer packaging of this palette, and this is how it looks from inside. And again, one good thing is all the details are mentioned in the on the inner packaging as well, which is really good. So all the price, expiry dates, and all other things, like everything, whatever is mentioned on the outer packaging is mentioned on the inner packaging as well, which I really like. This palette comes in 5 shades, and I got this one in the shade Beachside Peach. मुझे ये जो color scheme थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. So you get these 10 colors in this palette. So in this palette you get 5 matte shades. So this is a matte shade, this one is a matte shade, then this is a matte shade, and this and this. These are matte shades, and as you can clearly see, this and this one is a metallic shade. And these 2 shades which you see here, these are matte, but they have like little bit of shimmer to them. So I guess these are those shimmery shades. So it has a matte finish, but they got shimmer in these 2 shades. That's what I feel. So you get this brush with this, which is not a brush, actually it's a sponge applicator. So both side पे आपको sponge applicator मिलता है. वैसे तो ये कुछ खास यूज़ नहीं आता है, but you can use this sponge applicator to apply metallic shades. उसके साथ मतलब metallic shades का pigment काफ़ी अच्छा मिलता है if you are using this sponge applicator. Actually मैंने यही use किया है to apply the metallic shade when I created this look. So first let's see how I created this look, and then I will share my review about this palette with you. I might be looking little weird now because मैंने अपनी eyebrows कर लिए and I've cleaned them, और मैंने कुछ face पे कोई makeup नहीं किया हुआ है. तो eyebrows के लिए मैंने use किया है ये Nykaa की eyebrow pencil and this eyebrow cake from Miss Claire. तो ये pencil मैंने use किया to line my eyebrows, and then I filled my eyebrows using this eyebrow cake. तो ये 2 product मैंने use किए to fill my eyebrows, and to clean my eyebrows I use this concealer from Miss Claire. It's their full coverage concealer. तो ये जार की फॉर्म में आता है, तो इसलिए ये कंसीलर मुझे काफ़ी पसंद है to clean my eyebrows. I use this concealer only to clean my eyebrows. Now let's try this eyeshadow palette. So first I'll prep my eyes, and for that I'm using this eyeshadow base from NYX.
So ये दो शेड्स में आता है वाइट एंड स्किन टोन. द वन आई एम यूजिंग इज इन द शेड स्किन टोन. ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है. अगर आपने मेरा वो विश लिस्ट वाला वीडियो देखा होगा तो दिस वॉज इन माई विश लिस्ट. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी वॉच्ड दैट वीडियो, आई लिंक दैट वीडियो हियर एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन वॉच दैट. Nykaa actually started delivering recently, so I ordered this eyeshadow base. Now I am taking this eyeshadow base on this brush directly and मैं प्रेप कर लूँगी आइज को. पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ मैं इस eyeshadow बेस को. ओके, आई लाइक दिस eyeshadow बेस एक्चुअली. काफ़ी अच्छे से जो पिगमेंटेशन है उसको हाइड कर दिया है इस बेस ने. फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस शेड. आई विल अप्लाई दिस शेड इन माई क्रीज. सो आई एम टेकिंग दिस शेड एंड यू कैन सी इट हैज़ लिटिल बिट ऑफ किक बैक. तो ये जो काफ़ी किक बैक है एंड जो शेडोज़ हैं वो काफ़ी पाउडरी भी हैं. ये जो शेडो है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, डिसेंट पिगमेंट है इसका एंड इट वॉज वेरी इजी टू ब्लेंड. सो आई एम अप्लाइंग लिटिल बिट मोर बिकॉज आई वॉन्ट कि ये जो इंटेंसिटी हो इस शेड की क्रीज में थोड़ी ज़्यादा है. तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप दिस कलर. तो एक्चुअली ये अच्छा होता है अगर शेडोज़ की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उनको ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है एंड इट कैन लुक लिटिल पैची. तो इट्स बेटर कि आप जो कलर है उसको बिल्डअप कर पाएँ. तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ गुड. It's very easy to build up the color with this eyeshadows. Next I'm taking this shade and I will apply this shade as my transition shade. ये वाला जो शेड था जो मैंने क्रीज में अप्लाई किया था, this is a total matte shade. और ये जो शेड है जो मैं भी ट्रांजिशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, it has a little bit shimmer to it. So again you can see it also has a kickback, but इसका जो kickback है वो इस वाले शेड से थोड़ा कम है. So as I told you, इस शेड के अंदर थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं तो वो एज अ ट्रांजिशन शेड उतना अच्छा लग नहीं रहा है. तो आई विल टेक दिस शेड नाउ. इट्स अ मैट शेड लाइक दिस शेड विच आई हैव अप्लाइड इन द क्रीज. तो जो मैट शेड्स हैं उनका किकबैक थोड़ा ज़्यादा है. So this base is creasing. Actually it is not supposed to crease, but I think इस आई शेडो बेस के नीचे थोड़ा सा मैंने वो कंसीलर अप्लाई किया हुआ था, उसकी वजह से ये क्रीज कर रहा है. बट आई एम नॉट श्योर. थोड़ा यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या सीन है उसके साथ. सो दिस शेड विच आई एम यूजिंग नाउ इज़ एक्चुअली गुड. बट जो दूसरा शेड था जो मैंने यूज़ किया था इससे पहले एज ए ट्रांजिशन, दैट इज़ नॉट लुकिंग गुड एज अ ट्रांजिशन शेड बिकॉज उसके अंदर शिमर पार्टिकल्स हैं. तो वो थोड़ा सा पैची हो गया है. But we can't do anything now. So I'll again take that crease color. I'm trying to just fix that situation here. So I'm again taking this color little bit and I'll apply in my crease. Next I'm taking this shade. This is the darkest shade available in this palette. I'll apply that shade on my inner corners. Again, it's a matte shade and it has kickback.
बाय द वे मुझे कुछ अभी तक कोई फॉल आउट नहीं दिखा है किसी भी शेड का, मतलब ये जो शेड्स हैं इनका पैन में काफ़ी किकबैक है बट फॉल आउट नहीं है। तो अब जब बेसिकली आप जब इसको ब्रश पे ले रहे हैं तो जस्ट टैप ऑफ द एक्सेस, तो इससे आपको फॉल आउट बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो सिंस काफ़ी पाउडरी हैं शेडोज तो देयर कैन बी किकबैक, सॉरी फॉल आउट। अगेन ये शेडो भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है बट इट्स वेरी इजी टू बिल्ड अप द कलर। काफ़ी ब्यूटीफुल शेड है, काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो गया। नाउ आई एम टेकिंग दिस शेड, आई एम टेकिंग द सेम ब्रश एंड मैं इसको थोड़ा सा जो मैंने शेड पहले अप्लाई किया उसके थोड़ा अंदर की तरफ अप्लाई करूँगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन टू दिस शेड ऑन outer V, and I'm actually trying to use maximum shades from this palette. Again I'm taking this shade as well in my crease, पूरा अंदर तक नहीं लेके जा रही हूँ, और let's take it पूरा the crease. And I'm blending this shade with the shade in outer V as well. It's really hot here, so मैंने बाल बांध लिया है. Now next I'm using this shade. I'll just apply this shade on my brow bones. It's a very light shade, so it can be used to highlight the brow bones. But basically I'm using it to clean this brow bone area. So you can see it can be used to define your eyebrows. एक highlighted सा इफेक्ट आता है इस तरह का लाइट शेड यूज़ करने से, तो ये वाला जो शेड है वो काफ़ी अच्छा है उसके लिए. एंड यू कैन यूज़ दिस शेड इन योर इनर कॉर्नर्स एज वेल टू हाईलाइट योर इनर कॉर्नर्स. नेक्स्ट I want to use a metallic shade, but before that let's use this shade जो हमने पहले क्रीज में अप्लाई किया था, ये वाला शेड. एंड आई जस्ट अप्लाई दिस शेड ऑल ओवर माई लिड्स. सो एज आई टोल्ड यू इस शेड के अंदर थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं, तो you cannot use this shade as a transition shade or as a crease shade. At least I don't prefer using shimmery shades as a transition shade or in my crease. So I'll apply this all over my lids. See, it's looking really beautiful on the lids. So you can stop here as well, but I want to test most of the shades, so that's why I'm applying this metallic shade as well. So you have like these three shades, metallic shade, like this one is a metallic shade, and then these two are the metallic shade, these two and this one. So I'm using this metallic shade. So you get this brush with this eyeshadow palette, this sponge applicator. वैसे तो ये स्पॉन्ज एप्लीकेटर एकदम यूजलेस होते हैं, बट यू कैन यूज़ दिस स्पॉन्ज एप्लीकेटर्स टू अप्लाई मेटालिक शेड्स. इनके साथ मेटालिक शेड का पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा आता है. सो लेट्स ट्राई दिस. तो काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है इस शेड का, और इस एप्लीकेटर से काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जा रहा है. बट आई वॉन्ट टू गो ओवर विथ माई फिंगर्स. सो दिस इज हाउ द पिगमेंटेशन ऑफ दिस शेड इज. ऑब्वियसली विथ फिंगर्स यू विल गेट मोर पिगमेंटेशन ऑफ एनी मेटालिक शेड, एंड इट्स द सेम केस विथ दिस वन एज वेल.
So I'll complete this other eye and rest of my face and come back, and then we will complete this eye look. So yeah, I'm back with full face of makeup, and if you're wondering what I'm wearing on my lips, I'm wearing this lipstick from Colorpop. It's their Luxe lipstick and it's in the shade Mind Trick. Okay, now let's complete the eyes. So I'm taking this shade which I've applied in my crease, and I will apply that on my lower lash line as well. So I'm taking this color on this pencil brush. Next I'm taking this shade. I'm using the same brush. I'm applying it little closer to the lower lash line. Now I'm taking that darkest shade which we have here, this shade, and I will apply that to, on outer side of the lower lash line. Okay, so lower lash line is done. Now we don't have any shade to highlight the brow bones and inner corners. Like, I want little bit of highlighting. We use this shade on the brow bones, but I want little bit more highlighting. Oops, things are just falling here and there. So I'm using this highlighter from Wet n Wild. It's their Mega Glow highlighting powder, and this one is in the shade Precious Petals. Actually, I'm wearing this highlighter only on my face today. So if you want to know how to create this look will be up on my Instagram. I'll mention the Instagram handle on the screen and in the description box for you, so you can check this look on my Instagram. Where is my highlighting brush? Lost it. Where is it? I'm very hungry. I quickly want to complete this and go eat something. So I'm taking this and I'll just, wow, I really love this highlighter. Now for mascara, I'm using this Maybelline Lash Sensational Mascara. I'm actually trying to finish this mascara, so nowadays I'm using this mascara a lot. And anyway, I like this mascara. Yeah guys, this is the final look and I really love this look and I like this palette. The very first thing which I want to talk about is the size of the palette. जब मैंने इसको Instagram पे देखा था and when I saw other people using this palette, I thought कि जो palette है होगा इसका जो size थोड़ा बड़ा होगा, but ये काफ़ी छोटा palette है, मतलब काफ़ी tiny सा palette है. If I compare this palette with some other palette, let me grab some other palette. So I've got this palette with me. This is from Makeup Revolution. So if I keep it against this palette, you can see the size of the palette. The size of the palette is really small. ऐसे faces का palette आता है एक eyeshadow palette, उसके अंदर भी आपको 10 shades मिलते हैं. उसी तरह का size है इसका, and I guess उसका size इससे थोड़ा सा बड़ा होता है. I'm not sure actually. तो जो size है palette का वो काफ़ी छोटा है, and इसलिए आपको जो pan size है वो भी काफ़ी छोटा मिल रहा है. But it's like decent palette for the price, like 599 rupees के लिए. I think it's fine. Since इसकी cost बहुत ज़्यादा नहीं है तो I can work with the size and the pan size. So price के हिसाब से जो size है palette का वो काफ़ी सही है. But just that जो photos में आपको दिखता है और जो Instagram पे आपको दिखता है, that can actually mislead you. So I wanted to clarify that before starting the review. Now about the pigmentation of the palette. So जो colors हैं इसके, as you saw in the demo, जो colors हैं वो highly pigmented तो नहीं है. Like they claim कि you get rich color payoff, but I don't think that's the case with this palette. बहुत ज़्यादा highly pigmented तो नहीं है, but काफ़ी decent pigment है and बहुत easily blend हो जाता है. ये claim तो ये पक्के से
फुलफिल करता है. लाइक इट दे से दैट इट्स ईजी टू ब्लेंड एंड येस इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेंड. एकदम बटरी फॉर्मूला है, बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाते हैं एंड पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है बट यू कैन ईजिली बिल्ड अप द कलर. मतलब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट अ गुड पिगमेंटेशन, गुड कलर पे ऑफ, बट आप इजीली बिल्डअप कर पाएंगे कलर को और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है. बिल्कुल भी पैची नहीं लगते हैं ये पैलेट. एंड एक्चुअली अगर जो शेडोज़ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड रहते हैं तो चांस रहता है कि वो पैची दिखें जब आप उनको आइज पे अप्लाई करें. बट सिंस ये काफ़ी बटरी फॉर्मूला है इसका और बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड नहीं है और इजी टू ब्लेंड है तो पैचीनेस नहीं दिखती आपको. ऑल्सो एज यू सॉ इन द डेमो, ये जो शेडोज़ है इसके अंदर किक बैक है. सो व्हेन यू ट्राइंग टू टेक द शेडो यू विल सी किक बैक इन द पैन. So always remember to dust off the excess shadow. And ये kickback है, it means ये जो shadows हैं वो काफ़ी पाउडरी हैं बट ऐसे चौकी फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा पाउडरी है बट फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बटरी फॉर्मूला है. एंड देर इज़ नो फॉल आउट. मतलब किकबैक है पैन के अंदर बट आई डिडंट फेस एनी फॉल आउट ऑन द फेस, सो विच इज़ अ गुड थिंग. जस्ट दैट यू विल हैव टू रिमेंबर टू डस्ट ऑफ द एक्सेस बिफोर यू अप्लाई दीज आई शेडोज ऑन द आईज. ना सारे ही जो शेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किए थे. मैंने काफ़ी सारे शेड्स यूज़ किए. आई गेस मैंने 2 या 3 शेड्स होंगे जो मैंने इसमें से यूज़ नहीं किए. लाइक आई डिडंट यूज़ दिस शेड आई डिडंट यूज़ एंड आई यूज वन ऑफ दीज 3 मेटालिक शेड्स. तो केवल 3 शेड्स हैं जो मैंने इस पैलेट में से यूज़ नहीं किए. बाकी जो 7 शेड्स हैं मैंने यूज़ किए टू क्रिएट दिस लुक और सारे ही शेड काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किए थे एंड आई हैव नो कंप्लेन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द पैलेट. सो इट्स अ वेरी गुड पैलेट एंड बिगनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा पैलेट है बिकॉज जो कलर स्कीम है वो काफ़ी अच्छी है. स्पेशली ये जो शेड मेरे पास है, ये जो बीच साइड पीच है, सो इसकी जो कलर स्कीम काफ़ी अच्छी है. मतलब एवरीडे काइंड ऑफ पैलेट है. इससे आप नेचुरल लुक भी क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट पार्टी लुक्स एज वेल. लाइक व्हाट आई एम वेयरिंग, it's a party look. You can wear it for some wedding or some parties and you get very nice these metallic shades. So आप glam look भी create कर सकते हैं and using these shades you can create very basic look as well. You can create all matte look as well with this palette. So you can create many looks and it's a very good palette for everyday use, I would say. And about the price, this retails for 599 rupees, which is affordable I guess because जो quality है इस पैलेट की वो काफ़ी अच्छी है. तो अगर उसकी बात करें तो प्राइस जो है वो इस पैलेट की काफ़ी रीजनेबल प्राइस है अकॉर्डिंग टू मी. एंड दिस पैलेट इज़ ईजिली अवेलेबल एज वेल. यू कैन गेट दिस पैलेट फ्रॉम Nykaa, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन ईजिली अवेलेबल है ये पैलेट. तो that is also a good thing about this palette. So overall this is a very good palette for the price you are paying. Generally Nykaa के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है कई बार, बट ये जो पैलेट है आई थिंक इसका प्राइस काफ़ी रीजनेबल है क्योंकि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है आई शेडोज़ के साथ. एक्चुअली इसी वजह से मैं पहले थोड़ा सा रिलेक्टेंट थी वेदर टू बाय दिस पैलेट और नॉट, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि 600 रुपीज़ का वो सेल कर रहे हैं ये पैलेट तो कितना अच्छा होगा. बट ये पैलेट काफ़ी अच्छा है एंड आई डोंट रिग्रेट परचेजिंग दिस पैलेट. एंड यू कैन ऑल्सो गो हेड एंड परचेज दिस पैलेट इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस पैलेट एंड यू आर फीलिंग लिटिल रिलेक्टेंट लाइक मी. अगर आप थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन है कि आपको ये पैलेट परचेज करना चाहिए या नहीं, एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग फ्रॉम Nykaa एंड स्पेशली दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम Nykaa, यू कैन टोटली गो फॉर इट. दिस इज़ अ रियली गुड पैलेट एंड आई कैन ओनली टॉक अबाउट दिस शेड विच आई हैव, बीच साइड पीच. आई डोंट नो कि बाकी जो 4 पैलेट्स हैं उनके शेड्स कैसे परफॉर्म करते हैं, बट ये जो शेड मेरे पास है जो मैंने ट्राई किया है ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं. So yeah, that's all for today's video. I hope you like this video and it was helpful for you. If you did, please like and share this video. Also subscribe to my channel if you haven't done already. And don't forget to press the notification bell so that you will be notified for my future uploads. Let me know in the comment box if you want me to try any other affordable eyeshadow palette or any eyeshadow palette. If you want me to try and review, let me know in the comment box. So yeah guys, thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.